We'll start within 2-3 minutes, okay? 11:05. Okay, sir. कुछ बच्चों को छोड़ खाई दीजिए खीरा और चॉकलेट ना Sir, I have a doubt. Question. Yes. Sir, I am sharing the link in the Zoom chat. 1 minute. No, if you directly share, that will be better. Huh? So Okay, that sir. 1 through minute. discussion we can make it, no problem. I'm stopping my sharing. I'll Okay, sir. give you the option. No problem. Our course is a little ahead also. Not an issue. We're going to discuss more. सर हाँ सर वो मिड सेम तक हो चुका है ना? नहीं और एक है 2 क्लास का है लेकिन वो हमारा नेक्स्ट डेडलॉक टाइम वाला हाँ डेडलॉक का है प्रिवेंशन तक सर एक कॉन्करेंसी का टॉपिक है वो क्या है? ये सिंक्रोनाइजेशन ही कॉन्करेंसी है ये वो वाला? हाँ कॉन्करेंट एजुकेशन ओके ओके 1 मिनट शेयरिंग। सर तो फिर वो कॉन्करेंट मतलब है वो स्क्रीन विजिबल? हाँ it is visible. ओके It is visible too. Okay, fine. this question What is the question? this question Consider the following proposed solution to dining philosophical problem to avoid the deadlock. The binary semaphore lock is initialized to 1. Okay, so the lock is becoming initially 1. So there is while 1 and what is saying he is thinking, then wait for lock, then signal for lock. In between this he is going for this one, then eating, then the same kind of things. Okay, fine. So please participate. We'll wait for another 1 minute hardly. Please look into this question. सर 1 and 2 तो रिमूव नहीं कर सकते वो ठीक है बट 3 and 4 का डाउट है। Okay. Anybody please, others please look into this question. Then only you can learn something. Otherwise there is no meaning. सर वो सर 1 2 3 4 कोई भी रिमूव करते तो प्रॉब्लम होगा? नहीं वो आंसर अच्छा one का अगर प्रॉब्लम नहीं वो बोल रहा है कि consider the following. Once again I'm reading. I hope others you are present. 49 students sufficient. So that is while 1 it is repeated, then lock is initialized to 1. Let's take it is a binary semaphore. Binary semaphore means you have to think that it is either 1 0. It will not go beyond this. So सर म्यूटेक्स का जैसा काम है इधर म्यूटेक्स जैसा लॉक नॉर्मल लॉक जैसा है सोचिए. Then weight is 1, so only one person will be allowed. When one person is present inside the after 1th line, no person will be present in the after 3th line also. Am I correct? Yes sir. Yes, that is assuring. Then which of the following is a correct? Remove 1 and 2 will not affect the code. It will work fine.
No, sir. सर गलत है Not डेडलॉक work fine. सर डी होगा. 1 and 2 नहीं हो पाएगा because what is the no what will happen also that you have to know. सर Otherwise there is लेफ्ट no चॉपस्टिक्स लेकर वो अगर स्टॉप Sir, हो गया because मतलब that सर हमने deadlock. डिस्कस किया था Deadlock scenario. हाँ, Yes or sir. no? yes, sir. यस Yes, It is sir. indirectly a deadlock scenario. Fine. Because nobody can enter into if after this wait fork I, after 1th line, this wait fork I, whatever it is there, if it is context switching after this, if everybody gets context switching, definitely the error is coming. Yes or no? Yes, sir. Yes. Then second one, remove 3 and 4 will do like this. What Sir, will happen? Nothing, sir. It will work fine if we remove 3 and 4. सर It will work fine. Yes, Yes. sir. सर ये एक्सप्लेन कर देंगे. No, no. First you have to accept yes or no. No sir, I mean how it Why will not? work fine because No, removing 3 and 4 will not affect the code. Means it will work fine. The I first think it one will is affect. it will affect what way? Yes. Sir, What way? because after it, if context switching happening, then sir, 1 minute, sir. Sir, see, sir, if 1 and 2 is there, then at a time 2 philosophers can eat together. Then again, 2 context philosophers, switching not 2. It may be 3 is possible, not possible. Why not? Quick not answer. possible. Sir, Why not quick answer? 4 chopsticks required and 5 is present. Yes, So yes. 6 chopsticks are required if 3 is entering into this, but only Yes. 1 is present. That's why it is not possible. Good. Then after it, if I mean context switching occurs, then no other philosopher can eat. Then no it other is philosopher can eat. like a deadlock type scenario. I think. Why no other philosopher can eat? No 2 chopsticks are available, right? No, after eating the context switching is happening. Yes. Then again they will get a chance now, definitely. अच्छा पूरा new process start होगा. अच्छा. No, not new process. I mean After eating gets over, after this Yes. eating gets over, then what is going to happen? Then suppose the context switching is happening for both the 2 processes. Even if both the 2 processes, other 3 try to enter into which area? The top weight area, that is the line number 1 area. yes. Yes, if line number 1 area they want to enter, the other 3 persons they cannot enter, then can they enter? Sir, in after which line context switching is happening? After eat line, if Yes. the context switching is happening, please Yes. try to listen. Can I write little bit the code? Yes, sir. Yes. Yes. What is the answer? Please remember. First one is saying 1 and 2 is removed. No. 3 and 4 is removing. No. Third answer is giving. If you 1, will 2, be 3, removed, 4 तो is नहीं not होगा. giving, it is not affecting. नहीं होगा. ऊपर जाइए फिर. नहीं होगा. थोड़ा बंद कर दीजिए. मैं Okay, बताता. Stop. अब sharing बस बंद. Stop sharing. Thank you. So these are the things we have to actually learn. So first he is putting the mutex. Sorry. He is putting this is wait lock. Then wait. This is what he is saying. This is P of chopsticks of I. C of I. And Add wait. plus 1 mod 5. C of I plus 1 mod 5. Then it is signal lock. Then it is eating. Then again it is written Again, wait wait. lock. Then same wait. The signal. Sorry, signal थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ. नहीं सिग्नल मैं VP लिख देने से जल्दी होता. C of I. Then signal C of I plus 1 modulus 5. Okay. Then wait. Signal lock. Signal lock. He is saying if this 2 will be removed, can it work properly? His question is like this. Yes, sir. So first one is to nahi hua. So second one, can anybody answer? I want from you, so that I thought that you are understanding the things. Try.
It is not necessary that हर class में पूरा ज़्यादा पढ़ेंगे, आप practice भी चाहिए. बोलिए, if this two will be removed, where the problem will come? Like I told, if this two will be removed, then definitely if every process comes here and a context switching, everybody will be get their left chopsticks, but there is no right chopsticks available. That's why the first answer is wrong. Yes or no? Ith answer is wrong. Second is saying, if this two will be removed, only this two will be removed. डेडलॉक जैसा सिनेरियो नहीं होगा, मतलब एक फिलोसोफर को एक चॉपस्टिक्स मिलेगा, नहीं, मतलब तो वो आप तो वैसे ही सोचिए. What he was telling initially, how many maximum people will be enter into the eating state at a time? Anybody? Not you? Sir, 1 होगा. No. How many? Please tell me how many maximum a philosopher can enter into the eating state at a time? 2, sir. 2. Very nice. Because he can, if P0 is this, P0 can enter, can P2 will be enter or not? Because chopsticks both can enter. Yes or no? So maximum 2 philosopher can enter. If 2 philosopher will be enter, let's take the context switching is happening here. If the context switching is happening here, what is going to do if anybody wants to enter in this area? Please look into it. Suppose he has entered, and he has entered. Both of them are entering into this chopstick. Both of them are taking these chopsticks. Now let's take this one fellow has entered into this area. Then what is going to happen? Can anybody will be enter into this area when the 2 persons are context switching here? Yes or no? No, Yes, sir. Because weight is not. Because yes, no weight. because this lock is now currently free. Yes, sir. Currently free. So anybody can enter. If anybody can enter, what is going to happen? Please look into it. Suppose now P1, can your P1 enter? If P1 enter, then what happens? Then he will be wait here only. Yes. Let's take P1 has not entered. If P2 will be enter, P2 has to wait here. But if P3 will be, P4 will be enter. What happens? If P4 will also wait because one chopstick is available to P4. One chopsticks will be available. So it will also wait. No, because he can, at least he will be executed this part. Yes, sir. Sir, you talked about P2. I mean, sir, P0, P2 can enter at first time. P1 will not enter, yes, but P3 will enter, right? P0, P1, P0 and P2 first enter. Yes. Suppose P1 try to enter. Is there any issue? Yes, sir. First chopsticks not available. Has to wait here. He has to wait. Definitely Yes. he has to wait. What is wrong in this? If P2 wants to also enter. Sir, it Suppose is P3. P3 will be enter. If P3 is going to be enter, he is also locked here because his left chopsticks is off. Yes. If P4 gets enter, just look into it. If P4 is going enter here, then what will happen? The P4 has picked up these chopsticks. Yes. Yes, P4 has picked up these chopsticks, and then what will happen? He is now context switching here. Since he is context switching here, yes, here, now let's take this P2 is now become free. The P2 is now become free. Then what is going to happen? Which chopsticks will be available now? He has already occupied. He has occupied. Now P2 is released. If P2 will be released, then this and this will be free. Yes. If this and this will be free, can this P3 will be enter into that area? Yes. P1 also. Can P3 will be enter into that area? He cannot enter. Why, sir? Wait, CI will be executed. How Because it is free. will enter? Just see, even if this is free, he cannot enter because he is waiting for this one, which is not a free. Okay. Okay. Yes. Assume like this. Then what happens here? Now you have not made this one as a lock. So anybody can come here and free it. While you are freeing this particular thing, this is signal of this.
the signal of this is also available to this. See, if suppose somebody has already entered into this area, yes, somebody has already entered into this area, what he has made? He has made the CI to be, CI is accepted. Now what he does, then suppose any CI will become 0 if somebody is present here. Yes or no? If somebody is present here, its corresponding CI becomes 0. Correct? Yes. Or not? Yes. Then another person will be here. It is a no lock is present. If no lock will be present, if he is entered here, then this will be. I'll give a perfect example. Then you can understand. Let's take whose right side will be somebody's left side. Whose right side will be somebody's left side? P4's right side is P0's P0's right side will be P1's left. P1's left side. Yes or no? Yes. P0's right side will be P1's left side. Suppose the P0 first enter into this area. Yes, and context switching is happening. Can your P1 is eligible to enter? No. No? No. Because No. left is blocked because P0's right is P1's left. He has entered here. Yes. He has entered here. Now this is, he is waiting for this one. If he is waiting for this one, then what he has released? He has released here this C of I. C of I means this is becoming released. Okay. Yes. This is becoming released. If it is becoming released, then who will get a chance? He can release this. Suppose after that again the context switching is happening. Yes, here one context switching is happening. For what? P0. Who is present here? Again I'm writing. I got the point. I remove it. Who was present here first? P1 was P0 was present here. Means P0 has picked up this one and this one. Very nice one. This P0 has picked up this one. Now P1 has entered to this area. He can easily enter. Now what the P0 has done, since there is no lock, directly he comes here and executed this line. So P0. Then what happens here? This is becoming free. Yes. If this is becoming free, then this signal of now again the context switching is happening here. If the context switching is happening here, then he cannot enter because still this right hand side is not open. Now again this P0 has released this one. If P0 has released this one, then this is become released. So which side is released? This side is released. Then after this side is becoming released. Then after who has entered? Let's assume P1 can enter then, sir. One can enter to this area. P1 can enter to this area. If the P1 is entering into this area, now P0 comes out. Now P1 entering into this, and if the context switching is happening, then nothing will happen. The P1 is also getting this one. No, because still your this fellow is present here. Who is present here? Let's take no. That Sir, is only also P1 not is present in the waiting queue. No, I am not satisfied with this answer also. One second. I was just thinking in this way because I want a scenario, because this answer is incorrect, that I know, but I want to give you that. Sir, which one is? Tell me I mean, where the Sir. problem is occurred. Sir, Huh. if we have the second wait and signal, nobody can put the fork also, sir. If somebody is waiting in the No, everybody will put the fork. No, sir, if the Sir. wait and signal is the present, sir. signal is simply saying it will increase it. There is no condition present in the No, signal. sir, the wait lock, sir, the wait lock and signal lock, if it is there in put fork section. If it is present here, you are saying. Sir, here and in the below part, sir. Here also. If it is present, no, we are only considering the second answer. The second answer is saying if these things, two things will be removed, is there any issue? That is the second answer.
Third answer, you are saying that. First answer you told, if it is removed, then the context switching, if it is happening here, then this is the issue. Then the second answer is saying, if this weight and this weight is not present, then what is going to happen? Yes, sir. That weight and that signal only we have to remove, because, sir, if that is present, sir, then when one is trying to pick up the fork, nobody can be able to, sir, put down the fork. Who is, if anybody will be? Sir, if the second and the second weight and No, signal. I'm writing the number, you have to tell me. Don't worry. This is 1th line, 2th line, 3th line, 4th line, 5th line, so that you have to tell me where you are pointing. 6th line and 7th line, then 8th line, then 9th line. He is saying the 6th and 9th are not present. If 6th and 9th is not present, then is there any issue? You are saying no issue. Yes, sir. Yes, sir. There will Okay, be no issue. you are saying no issue. Fine. Why you are saying no issue? Sir, because if it is there, sir, then if one is trying to pick up the fork, sir, and that fork is not available, let's just say, then nobody will be able to put that fork down, sir. No, one has entered here, you are saying. Yes, sir. After 2 lines, suppose somebody has entered here, then if I put it here, so he can only enter. He can only enter. What is wrong in that? No, sir. I'm saying, sir, if somebody is waiting to pick up the fork, and that fork, if it is not available, sir, It will stay in the waiting queue then. Again, context switching happen, then again fork is released. I mean, I think. no, sir, fork will not be released, no, sir, because that wait lock is already in waiting. Means. No, if somebody is waited here, then Yes, sir. the persons, those who are present here, they can release it, no? अच्छा सर वो सेम म्यूटेक्स वेरिएबल सेम Yes, है sir. ना तो वो अच्छा Same वो mutex है ना, sir. हाँ तो वो लॉक हो जाएगा हाँ वो तो बात का क्वेश्चन आप बोल रहे हो, ये अगर लॉक होगा, मैं बोल रहा हूँ कि ये अगर नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर होगा, मेरा सर। क्वेश्चन था कि problem अगर होगा। नहीं होगा तो होगा प्रॉब्लम क्या? मुझे लगता है होगा होगा मेरे सर को हाँ लग आंसर में रहा है कि होगा तो मेरे को सर, डाउट था example पर वो बोल रहा क्लियर हूँ। हो गया क्योंकि वो वेरिएबल बोल रहा सेम हूँ, है क्यों बोल रहा हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगर somebody has entered here, okay, that time he is here only. Yes, that time somebody has released it, these two things, which is also related to this one. Actually, what happens, the person who is entering into this, that person has to be released this lock. यस सर पर वो कॉन्टेक्ट स्विचिंग तो हो सकता है ना बीच में सर अफेक्ट करेगा कोई और। Somebody has entered here, but instead of somebody has entered into this place, while entering into this place, he is releasing this one. ऐसे कोई कहां पर सिचुएशन आएगा वो बस मैं जानना चाहता हूं, मतलब again I'm saying somebody is present here and other fellow has directly executed these lines, then what happens, he has gone through this by making 0 and 0, one को वन हो जा रहा फिर। है कि नहीं, this fellow somehow increasing this one, but it is not a good practice, no. The person who has take the chopsticks, he has to only release the chopsticks. सर एक्चुअली क्वेश्चन था डेडलॉक सिनेरियो होगा या नहीं होगा, कोड फेल भी कर सकता है पर क्वेश्चन वहां पर भी क्वेश्चन नहीं था कि डेडलॉक सिनेरियो होगा कि नहीं होगा, हाँ सर वही क्वेश्चन नहीं डेडलॉक नहीं था, हाँ लिखा था कि कंसीडर द फॉलोइंग सॉल्यूशन of dining philosophers problem to avoid deadlock बस okay, avoid deadlock, avoid deadlock, okay. Can anybody think about that, is there any scenario at this place, कोई एक अंदर गया है यहाँ एंड ए लोग रिलीज कर रहे हैं, ऐसा हो पाएगा? सर अगर क्या बोलते हैं लाइन नंबर 4 में अगर P1 है P0 है और हम लोग और जो P1 है वो अभी वो 6, 7, 8 लाइन है उसको एग्जीक्यूट कर दिया तो फिर वो P0 का जो लेफ्ट फोक होगा नहीं राइट फोक वो चेंज हो गया, क्या प्रॉब्लम आ सकता है? Your P0 is present here, yes, then he has kept it these two chopsticks, then who has to enter?
नहीं नहीं P4 सर सर मैं बोल रहा हूँ कि वो P0 लाइन नंबर 3 हो गया उसका, लाइन नंबर 4 में है वो। और लाइन नंबर 4 पे है, ठीक है, पे हाँ, और फिर P1 वो हाँ, अभी लाइन नंबर 8 पे है। लाइन नंबर 8 पे, 8 पे है, हाँ मतलब रिलीज कर दिया था इसलिए यहाँ हाँ पर, हाँ। हाँ। तो सर इसमें अभी प्रॉब्लम आया क्योंकि P0 में वो पहले से ही वो रिलीज कर दिया P1 पी नॉट, राइट वाला। पी नॉट अभी यहाँ पे है, आप बोले, एंड P1 यहाँ पे, P1 8 में है, लाइन नंबर 8। 8 और अब यहाँ पे, हाँ बट सिनारियो हो सकता है क्या, पहले देखिए, कैन दिस हाँ सर, सिनारियो हैपनिंग लाइक दिस, यस सर। कैसे बोलिए? सर यहाँ पे तो वो लॉक नहीं है, तो ये P1 नो, पहले एग्जीक्यूट होगा। P1 अगर यहाँ पे है मतलब वो रिलीज करके यहाँ आया है, and that time the P0 has entered here, यस सर। and P0 has picked up these two things, and P1 has released it here, then what is the issue? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि पहले P1 आया ये ईटिंग स्टेट पे। eating statement P1 आया, फिर P0 फिर एंटर किया, हाँ, तो वो यहाँ लाइन पे नंबर 3 में आया, फिर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुआ, फिर नो, नहीं पाएगा, कौन नहीं पाएगा, लाइन नंबर हाँ 1 पे आएगा, then here this P0 can receive it, P0 यहाँ पे आ सकता है, यहाँ नहीं कर पाएगा, क्योंकि this value is becoming still 0, why? Because P0's right hand side is occupied by the P1, then कभी भी A क्रॉस करके नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, वो आंसर गलत है। और कुछ? सर आप पूछ रहे हैं कि मतलब आई मीन एक चॉपस्टिक रिलीज किया तो एक नया प्रोसेस आके वो चॉपस्टिक्स ले लिया, वैसा केस आप हाँ, जानना चाहते हैं? but- तो सर P0 आया था पहले, P0 दोनों चॉपस्टिक्स लेने के बाद ईटिंग स्टेट तक गया, उसके क्या? बाद कॉन्टेक्ट स्विचिंग हो गया। हाँ, लेट्स एज्यूम कि P4 आया था, आ P4 सकता है था, ना P4 P4 वो has taken this, एकदम, हाँ, तो नंबर 3 स्टेज में आके वो हाँ आ हाँ, जाएगा, इधर आके वो स्टॉप हो जाएगा, फिर हाँ, कॉन्टेक्ट स्विचिंग होगा, तो P0 ये दो चॉपस्टिक्स को रिलीज करेगा। आई मीन अगर लेफ्ट मतलब 7th लाइन को भी P0 एग्जीक्यूट कर देगा तो हाँ, P4 वो चॉपस्टिक ले लेगा ना। yes, P0 यहाँ लगेगा, then P4 has to be taken this both the Yes, chopsticks, तो and he has released this, then हाँ, तो फिर उसके बाद सर आप यही जानना चाहते थे कि वे चॉपस्टिक्स लेगा क्या? ए तो आपका सही हो गया, because P0 रिलीज किया तो immediately he has taken it, then there is no issue. नो अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था कि कॉन्टेक्ट स्विचिंग कब कब हो सकता है, मतलब ऐसे एक लाइन के बाद अचानक होगा या फिर एक लाइन के बाद अचानक हो सकता है कहीं पर, अच्छा, आई मीन सर ऐसा भी हो सकता है ना कि मतलब एकदम फ्रेश से अगर कंसीडर करें तो P0 आया, 1 एग्जीक्यूट किया, 2 एग्जीक्यूट किया, 3 कर सकता है, पर नहीं किया, अचानक से P1 एक नया प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ऐसा भी हो सकता है ना? हाँ पे वो भी हो सकता है, लेकिन वो तो लॉक से नहीं जाएगा ना सर, वेट लॉक नहीं जाएगा वो, ठीक है, पर मैं जस्ट पूछ रहा था कि कोई भी रैंडम स्टेप पे हो सकता है। ओके सेटिस्फाई नहीं हुआ मैं, फिर भी ए नहीं है बोल रहे हैं वो, ए नहीं है। आई होप अदर्स यू आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग, यस, डोंट आंसर व्हाई इट इज हैपनिंग, दैट इज माय क्वेश्चन। सर ये प्रॉब्लम तभी होगा जब वो सेम प्रोसेस अटेम्प्ट करेगा फिर से, नहीं तो ये ऐसा नहीं होगा डबल दोनों। P0 फिर से अटेम्प्ट करेगा, तभी वो लोग प्रॉब्लम आएगा जो बोले अभी, वो आप दोनों अगर सेम अटेम्प्ट कर रहा है तो। आप जो बोल रहे हैं, देखिए P0 यहाँ आया, ठीक है ना, P0 यहाँ आया, P0 अभी खाना खा रहा था, then P4 has entered, okay, this P4 has entered, then the P4 has taken this one, and P4 यहाँ आ गया, सर P4 लेफ्ट वाला लिया, ये वाला नहीं, ये वाला तो P4 बात वाला लिया, and P0 यहाँ आ गया, यहाँ आने के बाद P4 ये ले पाएगा, यस yes or no? After taking this one, now just look into it. After taking this one, the P0 has released also this one. यस After releasing this particular one, again let's take P0 enter where P4 is here. हाँ फिर क्या करेगा बोलिए? हाँ तो फिर सेम प्रोसेस होगा ना, वो लाइन नंबर 2 पे अटक जाएगा P0। Then again he has to be wait here. यस यस Again he has to be wait here. If Then you wait P4. here,
there is no issue, then something will be there. if डेडलॉक जैसा कुछ नहीं हुआ आई गेस, इसलिए आंसर deadlock तो नहीं हो रहा ना. हाँ मतलब प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है. 1 minute मुझे दीजिए हाँ बस. सर. 1 minute you have to give me. You also think, all you think. 61 people, please think. सर एक्चुअली मेरा डाउट था मतलब डिफरेंट कि दो मैक्सिमम फिलोसोफर लेने के बाद नया जब आएगा एक प्रॉब्लम तो जरूर होगा ना. वो क्या वही तो डाउट था. हाँ वो वही डाउट. एक प्रॉब्लम होगा ना. व्हाट एक- इज दैट प्रॉब्लम? सर जब तक सर only one process is waiting for this thing sir, pick up chopstick, तब तक सर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर. वन प्रोसेस अगर वेटिंग है तो नहीं होगा, आप बोल रहे हो. वन प्रोसेस अगर चॉपस्टिक पिक करने के लिए वेट यस करता है सर तो वो वही. नहीं हाँ होगा एक लेगा प्रॉब्लम. तो फ्री होगा बहुत, बट दो लेगा तो एक डाउट है कि तब क्योंकि प्रॉब्लम होगा. तो ए पिकअप किया है. सर मान लीजिए P0 और P2 पिकअप कर लिया है. फर्स्ट पी नॉट पिकअप किया था. हाँ और उसके बाद P1 नहीं कर पाएगा, P2 कर लिया पिकअप. P2 कर लिया. हाँ देन इसके बाद ईटिंग के बाद कॉन्टेक्ट स्विचिंग हो गया तो P1 का चांस आएगा, पर P1 तो कुछ नहीं कर पाएगा. वो नंबर 2 पे वो वेटिंग क्यू में चला जाएगा P1. फिर P3 आएगा. आई मीन क्योंकि P2 और P0 तो है तो P3 आएगा, तो P3 का भी लेफ्ट नहीं है राइट, और तो वो फिर भी वो P3 भी तो आ ही नहीं पाएगा ना, उसका वेट के बाहर ही नहीं जा पाएगा, मतलब वेट लॉक पे ही वो वेट कर लेगा डायरेक्ट. नहीं. अच्छा वो वेट लॉक है. हाँ तो फिर वो तो डेडलॉक जैसा ही हो गया ना. मैं कहाँ हुआ? नहीं सर P1 वेट करेगा, उसके बाद तो कोई आ भी नहीं पाएगा क्योंकि वेट लॉक तो अभी भी लॉक ही है ना. लॉक रिलीज नहीं हुआ. सेटिस्फाई मैं नहीं हूँ. P0 और P2 जब ड्रॉप करेगा फिर P1 तो बोला सर हो गया. नहीं मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हूँ. सर आपका सर कहना था कि जो वेट 0 कर रहा है सर वो कोई और 1 ना करे इसलिए. हाँ 1 ना करे सर बट जिसका चॉपस्टिक है सर उसका तो खाली लेफ्ट एंड राइट ही उसको चेंज कर पाएंगे, और उसके लिए तो सर वो ये चाहिए ना, रिलीज नहीं करेंगे तो वो लोग कैसे चेंज करेंगे? नहीं, ये तो सिग्नल किसी को भी चेंज कर देगा ना. ये वाला सिग्नल किसी को भी चेंज कर देगा ना. सपोज देखिए कोई यहाँ घुस गया मतलब इसका रिलीज हुआ है, राइट को रिलीज किया है, मतलब P0 ए रिलीज किया था, मतलब इसको रिलीज किया था. फिर आपका P0 यहाँ था. देन this has entered. When he has entered, then he will release this. There is no issue. हाँ सर ये काम करेगा सर. हम लोग उसको ये कंसिडर करें ना अभी कि वो इंडिविजुअल, लेकिन सर ये भी तो कनेक्टेड है ना, वेट और सिग्नल है, तो फिर अगर ये नहीं हुआ तो वो भी नहीं होगा. वो ऐसे ही वो सिंक्रोनाइज हो ही जाएगा. वो अगर ईटिंग स्टेट में आया अगर ये लाइन में, तो ये एक ही प्रोसेस खाली एग्जीक्यूट कर सकते हैं यहाँ पे. एक ही प्रोसेस यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकता है. हाँ एक ही प्रोसेस यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा. हाँ तो वो फिर वही उसको सिग्नल को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकता है. तो यहाँ पे जरूरत नहीं होगा म्यूटेक्स लॉक का. नहीं जरूरत होगा आप बोल रहे हो. हाँ सर शायद यही हो रहा है अभी इसलिए. हाँ P0 P1 P2 P3 एंड P4. मुझे और 2 मिनट चाहिए उसके बाद. हाँ कुछ मत बोलिए, मैं बस 2 मिनट के लिए बस सोच रहा हूँ. Okay. I'm thinking 2 minutes. Otherwise, I'll think later and tell you. But I think there will be a problem. What I'm thinking. So P0 यहाँ, P0 यहाँ पर, then P0 will be entered here. Then signal किया. Then suppose the context switching are every time happening at this place. So signal इसका सिग्नल वाला है. सिग्नल में context switching का यूज होना है. Situation
इसको रिलीज करके आया है यहाँ पे P0 has come here and P0 has come here by setting it. P2 इसको रिलीज कर देता हूँ P2 इसको रिलीज कर रहा हूँ 0 यहाँ पर रिलीज नहीं हुआ था P4 आया P4 has finished. After P4 has finished, then after P4 has finished here, then the P4 come here, will release this one. Let's take. Still it is becoming free. Still is becoming free. Now P1 is waiting here. P1 is waiting here because he has not released. He's not released, but he has released this. And P0 इसको रिलीज किया रिलीज करके इसको मिल जाएगा देन इसको पा लिया and P1 cannot do this things बस P2 इस टाइम पे ले लिया है and P0 has release this one P0 release किया P1 नहीं ले पाएगा रिलीज करके फिर से P0 ले लिया नहीं ले पाएगा because he has taken since he has taken already he is picked up these things he has entered he needs this one and he wants this suppose both of them are picked up he will release first maybe it's getting then P0 first release then P3 is also released this is release and this is release then suppose release नहीं हुआ then P2 नहीं हो पा रहा है हर टाइम सही दिखा रहा है सर सर आपका कहना था कि सर अगर P0 का चॉपस्टिक वो लिया है सर कोई और आके उसको रिलीज कर देगा करता है सर वो कोई और कैसे करेगा सर P4 या P1 ही कर पाएगा P0 का रिलीज कोई और नहीं उसका बगल वाला ही कर पाएगा हाँ सर रिलीज करने के लिए सर P4 के पास होना भी तो चाहिए या P1 के पास होना भी तो चाहिए सर वो लेगा कैसे अगर P0 के पास होगा तो क्योंकि वो सेम सीक्वेंस में भी है वैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये बिना डालने से भी हो सकते हैं ओके मैं इसको सोचूंगा थोड़ी देर बाद फिर आपको रिप्लाई करूंगा ये वाला ठीक है ना अच्छा क्वेश्चन लेकिन मुझे ये चाहिए सेकंड थर्ड पार्ट तो इजी है इफ ऑल विल बी रिमूव द सेम सिनेरियो विल कम इनटू पिक्चर सर वो बी और डी में ही डाउट था कि 3-4 रिमूव होगा कि नहीं होगा हाँ 3-4 रिमूव होगा कि नहीं ये वाला मैं फिर से देखूंगा आई एम थिंकिंग दैट विल बी अ प्रॉब्लम but I could not prove that there is a problem. Then there is no meaning of saying that. Yes, sir. Without this, if everybody comes means who? Only 2 people can come at a time, not more than this also. Yes. सर हाँ 6 और 9 में अगर सिग्नल और वेट रहेगा तो सर तब तो सर श्योरली प्रॉब्लम होगा सर नहीं देखिए किसी जगह पर क्या सिग्नल 2 आ रहा है नहीं ना
नहीं सर, वो 6 और रहने पे 9 कैसे में सर प्रॉब्लम जहाँ होगा? रिमूव किए हैं वेट और रहने से नहीं होगा ना प्रॉब्लम भाई। सर वो रहने से नहीं होगा कोई प्रॉब्लम, बट सर वो अगर लॉक रिमूव वाला, करेंगे। अरे मैं बता रहा हूँ होगा। हाँ ठीक है, उनको बोल दीजिए। हाँ सर वो 6 और 9 में जहाँ पहले वेट और सिग्नल था ना सर लॉक का, हाँ, वो रहने से सर श्योर प्रॉब्लम होगा। क्यों होगा सर बता रहा हूँ, क्योंकि नो वो तो आप बता चुके थे। हाँ सर। मैं अभी बोल रहा हूँ कि ये नहीं होने पर क्या प्रॉब्लम होगा। सर इससे इतना तो श्योर है कि मतलब 6 और 9 नहीं रहेगा ना सर मिनिमम। होने पे क्या प्रॉब्लम होगा सर, एक बार फिर से नहीं एक्सप्लेन नहीं, करना। अच्छा, 6 और 9 अगर मैं हटा देता हूं प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा आपके हिसाब से? नहीं होगा सर। नहीं होगा। नो सर। सर बिकॉज एज लॉन्ग एज सर वो जो वेट है सर, वेट लॉक और सिग्नल लॉक जो जहाँ पिकअप कर रहे हैं 4, वहाँ पे जब तक 1 प्रोसेस रहेगा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एट ओके मैक्स जब तक वहाँ पे 1 प्रोसेस रहेगा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, यू आर सेइंग लाइक दैट। यस सर। अगर 1 प्रोसेस रहेगा तब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसको निकाल देता हूँ, ए रहता है, ए नहीं रहता है तो चलेगा बोल रहा हूँ। यस सर। ए रहता है एंड दिस इज नॉट प्रेजेंट, देन यू आर सेइंग इट इज करेक्ट। यस सर। As for the answer also it is incorrect. If you remove it, it will create a problem. Yes or no? सर आंसर था कि आई मीन रिमूविंग 3 and 4 विल नॉट अफेक्ट द कोड, इट विल वर्क फाइन। वही है 4 और 6 and 3 and 4। यस यस 6 and 9 यस। 6 and 9 को अगर रिमूव करेंगे कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा कोई। नहीं करेगा। यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है, बिकॉज 6 and 9 को अगर रिमूव कर देंगे then there will be no issue because we are also not finding 6 and means 6 and 9, if you can remove it there will be no issue at all. That is a correct answer. Yes or no? Yes. If 6 and 9 will be removed, then there will be a correct answer because both of them are using it. Okay, okay. I'll think something and then at the end I'll give an answer. Yes. Any other? ये बोल सकता हूँ ये कि वो सेम चॉपस्टिक अपने आप से वो सिंक्रोनाइज है, वो वेट और सिग्नल के वजह से। हाँ, ए सिंक्रोनाइज प्रॉपरली है, दैट्स करेक्ट। ए प्रॉपरली सिंक्रोनाइज है, मतलब सेम सीक्वेंस में है, इसीलिए काम कर रहा है। एंड कोई भी एक बोले कि P0 अगर इसको एग्जीक्यूट करता है then it has to be only used by P1 and P4. Nobody else can pick up the same chopsticks. If others can pick up the same chopsticks, then there will be an issue. Since only the left hand it's right, that's why there is no issue. But still I'll give a confirmation after 1 hour or 2 hours. That is. In that line 7 and 8, if that is swapped, sir, then also it will work. Then there is a failure. If these two will be swapped, then there is a failure. No sir, it will work sir. It will work. सर Yes, कोई sir. भी एक चॉपस्टिक तो रिलीज होगा ना, तो प्रॉब्लम क्या होगा? जो लेफ्ट या राइट अगर इस दोनों को हम स्वैप कर देते हैं कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं No, होना sir. चाहिए ना। कोई भी एक चॉपस्टिक में रिलीज कर रहा हूँ तो आई गेस नहीं होगा। थोड़ा सोचिए ऐसा। चॉपस्टिक बोल रहे हैं तो बोल देंगे, आप थोड़ा सोच के बोलिए, टाइम लेने दीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट सोचिए कि ये दोनों को अगर मैं स्वैप कर देता हूँ कुछ प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा सर। नहीं होगा बोल रहे हैं? Yes sir, sure. सपोज मैं P0 का कर दिया, P0 को पहले अलाउ किया था, फिर P1 एंट्री हो गया, P4 एंट्री हो गया, then he has taken this one. Let's take, he has released the right hand side, then he has taken this one, then the context switching यहाँ पर है, यहाँ पर होने के बाद ए चला गया, फिर P0 फिर से ए रिलीज किया, रिलीज करके एंड इसको मिल गया है, इसको मिल गया है देखिए। एंड एक प्रॉब्लम हो जाए, सपोज P0 यहाँ था, एक डायरेक्टली नॉट डेडलॉक बट एक्चुअली द अप्रोच सही नहीं हो रहा है।
प्रोग्रेस सही नहीं हो रहा है। आप अगर देखेंगे, अगर P0 अंदर था यहाँ पर, ठीक है ना, देन P0 पहले रिलीज किया इसको, बिकॉज आप बोले थे कि ये स्वैप कर दिया, तो ये रिलीज किए। जब रिलीज किए, ए वाला फ्री है, देन सिंस इट इज फ्री, he has already entered. If he has not entered, then he has taken this, and he has also taken this. After taking both the chopsticks, then he has entered. If he has entered, then he has released this one. Still there is no issue is also coming. सर वो P1 के बाद P2 को ये करते ना सर, तो P1 रिलीज कर देगा राइट वाला, फिर P2 will pick up both, लेकिन रिलीज होके काम कर रहा है, सही है। तो सर बट रिलीज करेगा अगर खाली राइट रिलीज करने के बाद कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो जाएगा सर सबका सारा प्रोसेस का, तो सब लोग के पास सर सिर्फ लेफ्ट चॉपस्टिक रहेगा ना सर, डेडलॉक। ऐसे नहीं हो, अगर ये बोल रहे हैं कि आप ए रिलीज कर दिया, इसके पास ए रह गया, अच्छा फिर P1 will pick up both, फिर ए रिलीज कर दिया, yes sir, then P2 will yeah. लेकिन ये सब तो रिलीज कर पाएंगे ना, क्योंकि वेट एंड सिग्नल नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट यहाँ हो रहा था प्रॉब्लम, क्योंकि ये वेट था। सिग्नल में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होने पर कुछ प्रॉब्लम नहीं, दैट इज द मेन पॉइंट। क्योंकि सिग्नल में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होने पर हाँ यस सर अंडरस्टूड, तब भी काम कर जाएगा, ठीक है ना, इसलिए नहीं। करेक्ट। और एक क्वेश्चन था, आप देवांजन और भी क्वेश्चन रेडी कीजिए अभी, हाँ 2 मिनट में। और एक मेरा पास एक क्वेश्चन था, ये दिया गया है, देयर आर P0 प्रोसेस, P1 प्रोसेस एंड P2 प्रोसेस, एंड P0 इज executing a while loop. Everybody see, this is a infinite while loop. Then he is saying P of S0 एक लिया है, then print 0, 0 को प्रिंट कर रहा है, फिर V of S1 and V of S2. Then this P2 is using P of S1 and V of S0, and P2 is executing P of S2 and V of S0. Yes, this is the thing. And initially he is saying S0 is become 1 and S1 become 0 and S2 become 0. Then what is the pattern for this? In what way the display will be takes place? If S1 is 0, S0 is 0, S1 is 0, S2 is 0, and here you are using S0, P of S0, then V of S1, V of S2, and it is a loop. Knowingly he has given a loop. Then it is a P of S1 and P of S2, V of S0 and V of S0. What should be the output? एक क्वेश्चन मेरा पास था, बस बोलिए कितना होगा इसका आउटपुट। अच्छा डिस्कशन हुआ आज। कौन पहले घुसेगा? S0 can P1 and P2 able to execute? No, sir. No, So only P0. P0 No, can sir. execute. S0. Only P0. P0 can execute. If P0 can execute, here match the S1 to 0, then print 0. First it will print 0. Yes, no? After printing 0, even if the context switching is happening, no issue. Then what happens here? This V1 will be executed and this V2 will be has to be executed. Suppose after this again the context switching is happening. Then what happens? This P of S1 executed and V of S0 once incremented. Then it is goes to once again 1. Then again the context switching is happening. This cannot enter. Then who will enter? V of S2 will be enter. When V of S2 will be enter here, then again it is making 2. Then because he is making V of S0 to 2. So once it is becoming 2 because it is in a while loop, then once again it is entering. S0 is goes to 2 to 1 and they display another 0. Then again V of S1 and V of S2 gets executed. But since it is not a loop, the code will not come once again here. Then this same fellow will be entering
and make the 0 and 0 should be 0. That's why the output will be 0 0 0. सर फिर से v of s1 एग्जीक्यूट क्यों नहीं होगा? वो लूप नहीं है क्या 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 है सर? एक सेकंड सर, ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है कि सर पहले ये लूप नहीं है, यहाँ पे लूप नहीं है, यहाँ पे लूप नहीं। हाँ सर इसलिए वो ठीक है सर। नहीं, मैं पहले से बोल रहा था कि Yes. p0 पहले एग्जीक्यूट होगा क्योंकि s0 1 था। हाँ तो एक सेकंड सर, s0 1 s1 0 s2 0, तो उसके बाद वो 0 प्रिंट हो गया। उसके बाद अगर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुआ तो कोई रन नहीं करेगा क्योंकि वो दोनों 0 है। तो s1 में आएगा, s1 हो जाएगा 1। तो s1 के बाद अगर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो, मतलब s1 मतलब p1 रन करेगा तो वो s0 फिर से 0 करके वो 1 हो गया। ठीक है, yes that's it. Getting everybody getting why it is 3 zeros? सर नहीं हुआ नहीं सर। Here 2 times it is incrementing. Already it was 1 and it comes to 0, but when v is increasing s1 and s2 to be 1 and 1, this both of them can enter. Once both of them can enter, this line will be executed. This makes to once increment, this will be another increment. Then how many times it is increment? 2 times. So in 2 times increment, this while loop will be executed 2 times once again. If while loop will be executed 2 times, what is the output? The output is this one. Okay, got it? सर P1 सर दोबारा क्यों नहीं होगा सर? वो समझ नहीं आता। क्या 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 नहीं होगा सर P1 सर दोबारा क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पे? क्या? क्यों? क्योंकि यहाँ पर लूप नहीं दिया है जानबूझ के, यहाँ पर एक while one दिया है, इसलिए बोल रहा हूँ कि वो भी आप फोकस करो थोड़ा। प्रोसेस डेड हो जाएगा ना P1 और P2। This P1 and P2 will be dead after once they will executed these 2 lines, but this is repeatedly executed. That's why it is become 0 0. Okay, any other question? सर ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन था सर, आप लिख लीजिए। मतलब ऐसे तीनों प्रोसेस था T1 T2 T3 करके। तो हाँ बोलिए। हाँ T1 T2 T3। T1 T2 T3 करेक्ट। तो पहले तीनों का while ट्रू है, मतलब एक इनफाइनाइट while लूप बनाना होगा। while one one yes true what कोई others please participate। हाँ तो तीनों का एक ही है। while one T1 का होगा wait S3, मतलब S1 S2 S3 PS3 PS3 then print C then VS2 हाँ T2 का होगा PS1 V I mean print B VS3 हाँ and then T3 का होगा PS2 print A VS1 और हाँ सर बोला है कि ये सीक्वेंस प्रिंट होगा BCA नहीं S1 S2 S3 क्या है इसका वैल्यू चाहिए। मतलब वही क्वेश्चन है कि सर इसके बाद बोला है कि BCA का एक सीक्वेंस प्रिंट होगा BCA ऐसे करके। ओके आपका BCA का एक सीक्वेंस चाहिए। हाँ BCA होगा फिर BCA ऐसे रिपीट करेगा। हाँ तो ऑप्शन में S1 S2 S3 का वैल्यू जंबल करके you have to find, no don't tell them, you have to find out what should be my S1's value, what should be my S2's value, what should be my S3's value. This is the question. Yes sir. Yes. So are you getting the question what is saying? These 3 processes are running concurrently. This is the code for this. He wants the output should be BCA and BCA. Then what should be the value of S1 1 and S3? S1 1 और S2 0 और S3 0। S1 1 2 0 and S3 0. Why others please can anybody tell me? सर पहले B प्रिंट होगा। B एग्जीक्यूट होगा because S1 एक ही एग्जीक्यूट हो पाएगा, पहले एग्जीक्यूट होगा, B प्रिंट किया पहले, then उसके बाद S3 को बढ़ा दिया। So see this S3 increase means it is going here. Yes. Then C को प्रिंट किया, then it is going here. हो गया। A को प्रिंट किया, then it is going here. So it is repeated or not? यहाँ से शुरू किया, यहाँ गया। आप अगर देखोगे सीक्वेंस, फर्स्ट S1 becomes 1. So यहाँ से शुरू किया, फर्स्ट यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर this is coming, then this is coming, then this is coming, then again this is coming. So it is in a loop. Okay, so that's why it is now.
करेक्ट। Yes. तो सर एक क्वेश्चन मैंने वो चैट बॉक्स पे दिया, वो एक बार आप डाउनलोड कर लेंगे, देखिए थोड़ा बड़ा है, डाउनलोड करके दिखाऊंगा। चैट बॉक्स पे देख लीजिए सर। हाँ, एक मिनट, चैट बॉक्स कहाँ पे है? चैट डाउनलोड किया, कहाँ पे करूंगा? मेल के अंदर सेव का होगा, Q1 क्वेश्चन, Q1 क्वेश्चन सेव किया, हो गया। फिर हम जाएंगे जिसको एंड बिकम Q1। Yes, I hope everyone. Yeah? Yes. So consider a three processes, process 0, 1, 2 respectively, with computing time burst is 2 for 8 units, 8 time units. All processes arrive at time 0. Consider the longest remaining time first scheduling algorithm. Like shortest remaining time, here it is saying Longest. remaining time. Longest. Then LRTF tries to broken by giving the priority. Okay, in LRTF, ties are broken by giving the priority to the process with the lowest process ID. The average turnaround time is what? This is the question, no? हाँ सर, मेरा वो गैंट चार्ट गलत आ रहा था आंसर के साथ। No, that's okay. First years, I'll just make it 2 screens so that we can do it. Okay, so so what is the question? He is saying that he is saying here that there is 3 processes 0, 1, 2. So P0, P1 and P2. Then CPU burst time दिया है, what is 248 248 arrival time same है सब, and arrival time is 000. exactly same. Then he is saying that consider the LRTF. LRTF means preemptive one. Okay, it is a preemptive one. Yes. Since it is a preemptive one, then consider the longest remaining time first scheduling algorithm. In LRTF, ties are broken. Ties are broken. What does it means? सर दो प्रोसेस का एवरेज आई मीन बर्स्ट सेम होगा तो जिसका प्रायोरिटी ज्यादा वो पहले होगा। But what is the priority he is saying here? 0 का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। Very nice, very nice. Okay, so हम शुरू करते हैं फिर। So first who will execute? P2. So now 0 to कितना तक चलेगा? बोलिए कोई? पूरा 8 तक ही चलेगा। पूरा 4 तक। पूरा 4 क्यों सर? 8 तक ना, सब आ गया ना। सुनिए ना। After 4 units gets over, it has only 4 units left. Yes. Then this and was the same. Since it is becoming same, then who is going to be executed? Just now you told. अच्छा, P1. Okay. P1 gets executed. So P1 will be executed how long? 6. No. 2. P1 will be executed 1 unit. Only up to 5. Then it is becoming 3. When it is becoming 3, again P2 will be executed because P2's unit is 4. Are you getting it? Yes. Now P2 becomes 3. If it is 3, then 3 and 3 will be same. Then what happens here? Again P1 executed up to 2. And again P2 executed up to 2. Now 3 are same. Then who executed first? P0. P0. Yes, then it is goes to 1. So this is 5, 6, 7, 8, 9. 1. Then who is greater? P1 and P2. So he will be greater. Correct? Sir, no, P0 is greater because LRTF. That's right. So these 2 are 2. That's why it is greater. Then again comes 10. Then this become 2. Then P2 will be greater. Then it is become 11. Then only 1 left. So first P0, then P1, then P2. P0, then P1, then P2. So this is coming as a 12, 13 and 14. So किसका context switching ज्यादा? क्या पूछा है फिर last को?
turnaround time मतलब tell me what is the turnaround time of P0? 12 minus 12 13 and 14 हर एक जीरो पे आया है 13 and 13 14 14 so 14 12 13 means 13 आंसर 13 आएगा। हाँ 13 है सर, वो स्विच करना मैं भूल गया, मैं 0 से 8 कर दिया था। Where is this place? Okay, got it? Yes. This is the thing. Few more questions like this we'll discuss in the next Friday. Monday, Tuesday we'll read something, but keep many questions like this the way Devanjan has asked. Keep it. सर आज पूरा फ्री था एक्चुअली, और कोई क्लास नहीं है, लैब कैंसिल है, शिफ्ट हो गया। लैब OS-2 सैटरडे हो गया लैब। आधा घंटा पढ़ते हैं फिर। यस हो पाएगा? ओके, क्वेश्चंस। और एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन। यस, वेरी नाइस। वो मैं क्या सोच रहा हूँ, वो जो क्वेश्चन था, सिंस इट इज अ सिग्नल पार्ट, सिग्नल में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का कुछ फर्क नहीं पड़ता, दैट्स व्हाई इट इज नो इशू ड्यूरिंग दैट टाइम, that should be the answer, because since it is a signal and signal has no condition, there will be no issue comes if you remove the context lock in the signal codes. Still I'll think and tell you. Currently I am not able to think. Yes, questions next. देवांजन रेडी है क्वेश्चन और कुछ? सेकंड सर, एक सेकंड में ढूंढ रहा हूं। हाँ कीजिए ना। हाँ सर, ये राउंड रॉबिन वाला है। राउंड रॉबिन बोलिए। ये सर उसमें अराइवल टाइम, सीपीयू टाइम, फिर आईओ और सीपीयू है, 2 सीपीयू और 1 आईओ है। हाँ बोलोगे? बोल पा P1 P2 करके। हाँ। उसमें P1 है 0। नो, कितना प्रोसेस है टोटल? P4। P1 से P4। हाँ हाँ। देन उसमें अराइवल टाइम 0415। 0415। Then CPU is 2432। 2432। Then IO is 1341। IO is 1341। Then CPU is 3214। 3214। Then बस इतना ही सर। इतना ही है और सर। इसका QT है 2। QT है 2। क्वांटम टाइम है 2। ओके, क्या करना है सर? वो चार्ट बनाना है। चार्ट बनाना सिर्फ। ओके, सो फर्स्ट इज यूजिंग IO देन CPU। इज इट CPU पहले होगा ना? अच्छा, IO तो 1 में है। when this sequence means he is following first IO then CPU. Okay, so we'll do it. So who will first come? P0, P1. Yes, but P1 का पहले IO है, कितना यूज करेगा? हम लोग पहले A कर देते हैं, 0 1 ऐसे कर देते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 11 14। ओके, इतने तक किया हूं, देखते हैं। सो पहले एक खींच लेते हैं। Okay, so is it given that IO should be considered first? the way this sequence has given, in the same sequence it is actually. Okay, so अगर पहले नहीं CPU है ना, तो CPU पहले। हाँ मैं ये दिखाना था, पहले CPU then IO then this. So who will first execute? P1, because P1 first come, so we'll make a queue first, we'll maintain a queue. So P1 पहले आया, एग्जीक्यूट हो रहा था 2 यूनिट के लिए, क्यों क्वांटम टाइम 2 दिया है, then P1 first executed P1 and P1, and after that this P1 goes for IO. So the P1 goes for IO, P1 को पहले 0 हो गया, then P1 goes for IO here. सही किया? Yes, the P1 goes for IO, A भी खत्म हो गया, यहां से P1 का A शुरू होगा, छोड़ दीजिए। फिर हमारा A
दो जब हुआ था, एक जब हुआ था, during one this has joined P3. Yes or no? During one this P3 has joined. Once the P1 completed at 2, nobody has come, only P3 present here. Since P3 is present here, what the P3 will do? The P3 start executing. From which place? This place. Correct? कितना तक execute करेगा? 2 यूनिट. 2 यूनिट मतलब guaranteed है इसका P3. Yes? So P3 बाहर था. जब वो 3-4 एग्जीक्यूट कर रहा था, एक आ गया है P2. Correct? And this P3 which is partially completed, P3 stands here. Correct? P1. Yes, but please remember one error we have made. At P3 the P1 has also joined. At P3 P1 has also joined, but P2 has come here. Then who will come first? This should not be this. While P3 was executing this one, while P3 was executing at 3, then this P1 has joined first. Then at P2 has joined. Then this P3 has joined. Okay, these are the 3 fellows have joined here. Now they all are coming. Now he is here. Now who will execute? This P1 gets execute. The P1 will start executing here up to 1 unit. Yes, up to 1 unit. So after 1 unit, just see, after 1 unit, because he has to be executed 2 unit, because context switching will be happening here. But at 5 o'clock now, at 5 o'clock, this fellow has come here, this P4. Yes, and this P1 has completed here, and then again he has to be joined it here. Means every process has come now. So no need to worry. So who are standing? P2, P3, P4, P1 is standing in this queue. Okay. Now who is executed? This P2 will be executed. So P2 का कितना होगा? 2 unit. So 2 units. So P2 गया, P2 फिर से आ गया 2 unit खत्म करके. फिर P3 गया. देखिए P3 का 1 unit हुआ, बस 1 unit. After 1 unit, this P3 has completed to 0 and it is continue for 4 units. So P3 has continue up to 12. No, P2 का 2 units, no? नहीं किया क्या? P2 का 2 units and P3 का this. If P3 का this, then it will be start from here. P2, then P3 का 9 से 13. ओके, करेक्ट है. सो इसका 2 बचा है, इसका भी हो गया. यस, ए अभी बचा है, देन इसका भी ए बचा है, इसका भी ए बचा है. अभी कौन खड़ा है बोलिए? P3. सो P3 तो ये चला गया, P3 आईओ के लिए चला गया, इसको हटा दीजिए. अभी P3 आईओ के लिए चला गया. फिर P4. सो P4 अभी एग्जीक्यूट हुआ. P4 का 2 यूनिट्स. सो P4 एंड P4 2 यूनिट्स हुआ, 0 हुआ. फिर P4 यहां से यहां तक गया. यस, P4 यहां से यहां तक गया, वो भी बाहर है. यस, सो अभी कौन आया बोलिए? नाउ P1 हाउ मच यूनिट? 1 यूनिट. ओनली 12 तक किया. 12 तक करने के बाद ये खुद ही मर गया. यस, देन who has joined here? This P4 has joined here. Yes or no? At this point the P4 has joined here. Then P2 will be executed. So the P2 gets executed. P2 का क्या है? 2 units. So P2 execute हुआ 2 units, P2 and यहाँ पर P2 जब execute हो रहा था, then this P3 has joined here. Then P2 has come here. After the P2 completed its 2 units, it is becoming 0. Then P2 starts his IO work for 3 units. Who is P2? P2 starts IO for 3 units.
देन किसका आयो खत्म हो गया बोलिए, P4 का आयो खत्म हो गया है, P का भी खत्म हो गया है, इसका भी खत्म हो गया, कौन अभी है बोलिए, यहाँ पर P4 है, सो P4 इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, P4 का एग्जीक्यूट कीजिए, कितना है 2 यूनिट्स, P4 देन P4 फिर से ज्वाइन हुआ, देन P3 का एग्जीक्यूट होगा 1 यूनिट, P3 का 1 यूनिट एग्जीक्यूट हुआ, जब भी एग्जीक्यूट हो रहा था ये खत्म हो गया इसका, बिकॉज P3 का 1 यूनिट खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, देन कहा गया फिर, देन P4 का 2 यूनिट खत्म हो गया था ना, सो 2 यूनिट्स हैज लेफ्ट, देन P3 हैज कंप्लीटेड, देन हु हैज जॉइंड, this P2 has joined, then P4 will be execute, P4 again execute for 2 units, so when the P4 will be executed for 2 units, then P4 and P4, so ये भी खत्म हो गया, then only P2, and this is P2 and P2, exactly 20 minutes, this is the okay, got it, is this the answer, this is the answer. Yes, sir. Yes, this is the answer. I hope you can do the turnaround waiting and this. Other things you can make it or not? Yes, sir. Yes. Any other question? सर एक क्वेश्चन, हाँ, सर एक सेकंड चैट बॉक्स पे देखो, चैट बॉक्स में, हाँ, ओके, जाऊं चैट बॉक्स, देवांजन, यस सर, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में देवांजन ने दिए हैं ये वाला, दिस 12-13 को, हाँ 12-13 को दिए हैं, दिस में करेंगे, मिलेंगे, फिर नाम देंगे Q2 and save, it is done and done. 0.5 ये कौन सा कर दिया 12-13 को, 3 क्वेश्चंस मैंने भेजा था, अभी 3 भेजा हूँ टोटल, ओके एक क्वेश्चन किया हूँ 12-13 का, एक एक करके करेंगे, हाँ हाँ सर, नो प्रॉब्लम, देन Q1 हो गया हमारा, Q2 का, Q2 हाँ दिस इज यस, सर इसका मेरे को ग्रेटर देन और लेस देन में कंफ्यूजन हो रहा था, बस यही था, आप एक बार देख लीजिए, बोलिए क्या, जब A और B का आंसर होगा आई एम श्योर, बट वो ग्रेटर देन लेस देन का कॉन्सेप्ट कुछ इजी कॉन्सेप्ट पर वो समझ नहीं आ रहा था, बस वही। consider n processes sharing the CPU in a round robin fashion, assume that each process switch means each process switch takes yes sir, switching होगा, switching in a second, what must be the quantum size of a queue such that the overhead result from the process switching is minimized, but at the same time each process is guaranteed to get its turn at the CPU at least every t seconds, T seconds. क्या क्या दिया है बोलिए एक एक करके, इस क्वेश्चन में कोई एक पढ़िए प्लीज, टेल मी व्हाट आर द थिंग्स हैज गिवन टू यू। सर एम प्रोसेसेस था, तो सर मैंने वो सर एमसीक्यू था तो इसलिए मैंने 3 प्रोसेसेस ले लिया, तो वो कैलकुलेशन में थोड़ा इजी होगा, या फिर 2 ले लेते हैं ना सर, 2 में सबसे इजी होगा। हाँ ठीक है लिए थे, 2 प्रोसेस ले लिया था मैंने। हाँ। फिर पी क्या बोला है सर, क्वांटम टाइम सर, तो फिर P1 से स्टार्ट किया प्रोसेस, हाँ तो 0 से Q तक P1 रन होगा। नहीं पहले क्या क्या दिया है बोलिए। अच्छा ओ सर एक प्रोसेस स्विच कर लिए 1 सेकंड चाहिए, 1 मिनट, हाँ एक प्रोसेस स्विच करने के लिए 1 सेकंड चाहिए, 1 सेकंड चाहिए, और क्वांटम टाइम Q है। हाँ एक प्रोसेस, देयर आर n processes are present, हाँ there are n processes, हाँ देन एक प्रोसेस स्विच करने के लिए
एस सेकंड एस सेकंड चाहिए। अगर मैं P1 से P2 को स्विच करता हूँ देन मुझे एस सेकंड चाहिए। देन क्वांटम टाइम है क्यू। क्वांटम टाइम है क्यू। क्यू इज द क्यूटी इक्वल टू क्यू। हाँ और बी बस होगा बोला आंसर। है कि क्या होगा? बी होगा सर आंसर, हाँ क्योंकि Okay. क्वांटम टाइम ग्रेटर होना चाहिए उसका, वो Yes, कॉन्टेक्स्ट sir. स्विचिंग टाइम से, हाँ। तभी अच्छा काम करेगा। हाँ तो और क्या दिया है? और क्या दिया है? ठीक है, और क्या दिया है? टाइम टी क्या हो, टू गेट इट्स डन एट सीपीयू एटलीस्ट t seconds. Consider n processes sharing the CPU in a round robin fashion. Okay, they are in round robin. Assume that each process switches takes a second. एक प्रोसेस से और एक प्रोसेस को स्विच करने के लिए उसको एस सेकंड, ही नीड्स एस सेकंड. What must be the quantum size q? ये पूछा है कि what should be the q such that the overhead results from process switching is minimized, but at the same time each process is guaranteed to get its turn at the CPU at least क्या दिया है? at least every t seconds. at least वो at least होगा सर। हाँ, at least in every every t seconds। t second में हो पाएगा। हाँ ओके, आंसर every t second. If you can think about this, every t second he will get a chance. Then what should be this? So each process, if it is a context switching, n such processes. Okay, there are n processes. yes So each requires s, then it will be requires ns seconds. ns minimum। yes, ns second. टोटल टाइम t के अंदर वो होना चाहिए। yes टोटल टाइम t के अंदर होना चाहिए। अगर वो अंदर होना चाहिए, t is usually greater than that. yes sir. Yes or no? This n switches has to be happening inside the t seconds or not? In every t second, all the processes will get the chance. Means t is yes greater. sir yes sir yes If t is greater than this, now you see the whatever the left out, because every question's answer is t minus ns. yes जो भी आपका t minus ns होगा, yes, whatever the t minus ns, if you take an average among rest of the processes, if you take an average, because if you can take an average of all the processes, then your quantum time should be greater than this or less than this. That is the only thing you have to find out. हाँ वही। Because you should not think about a n plus 1 process, rather it should be n minus 1 process. why sir not n, I mean not n plus 1 why? अगर आपका n प्रोसेस के लिए एक प्रोसेस चल रहा है, मतलब रेस्ट ऑफ द प्रोसेस बाकी के माइनस लिए। ना। अच्छा, तो वो उसके लिए वो एवरेज हो जाएगा। वो एवरेज आपका हो जाएगा। ये एवरेज टाइम है। हाँ, ये आपका एवरेज टाइम है, क्योंकि तो ये क्वांटम टाइम से छोटा होगा तभी वो स्विच करेगा ना। क्वांटम टाइम से छोटा होना चाहिए तो ज्यादा स्विच है। n processes has to be do it in this, जो बचा है whatever it is left out here, this queue is अगर एग्जीक्यूट हुआ, सपोज 3 प्रोसेस है, 3 प्रोसेस बोल रहा है कि take a second and what must be the quantum size q such that the overhead resulting from the process switching is minimized, but at the same time each process is guaranteed to get average time which overhead resulting from the आपका ज्यादा context switching वो भी नहीं चाहता है। He does not want the more context switching because he is saying the quantum time q in such a that the overhead resulting from processing the switching is minimized. Process switching minimize होगा। हाँ, Process switching minimize होगा, मतलब ज्यादा वो नहीं करना चाहता है। अगर आप q को उससे भी कम कर दिए then वो तो बहुत ज्यादा होगा। अच्छा, ओके, तो ये ज्यादा होगा q से, फिर प्रोसेस ज्यादा होना चाहिए। उसलिए ये था, यही था वो। ओके, ग्रेटर देन लेस देन वो समझ नहीं आता। ओके, ये तो आंसर क्या है? ए है।
मेरे को भी बी आया था पहले, वो डाउट था। बिकॉज दैट इज द रीजन, अगर आपका ए कम हो गया देन ए नहीं हो पाएगा। हाँ सर, मैं ये n-1 n प्रोसेस नहीं लेके मैंने 2 प्रोसेस लेके कैलकुलेट कर रहा था। Okay. तब ये हाँ तब ठीक नहीं है, आना। तो ये भी तो शायद नेट पे है एक क्वेश्चन। ये गेट का क्वेश्चन था। हाँ सर सर जो रिमाइंडर जो ये टाइम बच रहा है, हाँ सर वो वाला क्वांटम टाइम से ग्रेटर देन होगा। सर 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 अगर तब तो आंसर बात सर ए होगा ज्यादा होगा सर, ना। हाँ सर अगर आंसर ए होगा, अगर क्यू 0 कर देंगे तो सर वो वैलिड होगा ना सर। no, ये तो पूछा है ना, the such that the overhead resulting from the switching is minimized but at the same time each process, अगर आपका Q आपका less than equal to, because answer if it is less than equal to tn-1 हुआ, so tn-1 से हम n प्रोसेस को किए and t सेकंड के अंदर all n process has executed, yes or no? हाँ This सर, तो हाँ executed, then whatever the time has left out and all n-1 process has to be again re-executed. If it is re-executed, if your q is greater than this, then another process can also get a chance to be executed. yes yes More number of a process can be executed during this t times. अगर देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, अगर इसको हम ग्रेटर देन कर देते हैं, जो टाइम बचा है वो भी क्यू, जो टाइम बचा है, इफ क्यू इज ग्रेटर देन दिस, देन ए वाला पार्ट इससे एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, ए वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। व्हाटएवर इट इज लेफ्ट आउट द एवरेज, हाँ एवरेज नहीं हो पाएगा। देखिए जो व्हाटएवर द टी माइनस एन ए का एवरेज है, ए टी माइनस एन ए, एवरेज शुड बी व्हाट, इट शुड बी लेस देन। नाउ इफ एवरेज आपका ग्रेटर हो गया देन और प्रोसेसेस भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। एवरेज, इट इज नॉट ओनली टी माइनस एन एस। अगर ओनली टी माइनस एन एस होता, आपका जो बी आंसर होता। सिंस इज टेकिंग एन एवरेज, द एवरेज टाइम शुड बी ग्रेटर देन दिस। अगर क्यू से बड़ा है, जो बच्चा है वो एवरेज टाइम क्यू से बड़ा होना चाहिए। सो क्यू से अगर बड़ा होगा एवरेज टाइम, देन सबको मिला के उतना हो रहा है। वही होना चाहिए ना। क्यों सर मतलब अगर ए क्वांटम सर टाइम तो अगर मैक्सिमम राइट, ये स्विचिंग है सर, तो मतलब मैक्स टू मैक्स एक बार ही वो हर एक प्रोसेस स्विच कर पाएगा। आई मीन वही एक प्रोसेस यहाँ पे कर दिया है, हाँ यहाँ पे कर दिया है। जो बच्चा है whatever, suppose he has done, this is the t time, all the process here up to done up to ns, only this much has left which is t minus ns. यस इस t minus ns में अगर n minus 1s प्रोसेस और एक हर एक एग्जीक्यूट हो रहे हैं, yes it is possible to be executed, इसका हर एक प्रोसेस अगर हो रहे हैं, देन तो उससे बड़ा हो गया ना। नहीं सर ये होगा ना, मतलब मैं बोल रहा हूँ ये वाला तो हुआ टी माइनस एन एस जो कि उसका एन माइनस फिर से बोल रहा हूँ, एक मिनट बस सुनिए। जो मैं एन एस माइनस 1 कर दिया, जितना भी बचा, ओके बचा, मैं उसका एवरेज निकाला n माइनस 1 से, रेस्ट विल बी एग्जीक्यूटेड, क्योंकि यहाँ पर लास्ट प्रोसेस खत्म हो गया होगा, हर एक प्रोसेस यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। अगर उसका एवरेज क्यू से बड़ा है, क्यू से बड़ा है मतलब क्या है, देयर इज अनदर slot starts at this scenario, another slot of all processes starts at this scenario. Otherwise क्या होगा, few of the processes will be executed here. सपोज सोचिए, फिर से बोल रहा हूं, सपोज आपके पास 5 प्रोसेस है, वो बोला कि मुझे P1 से P5 तक यहां पर एग्जीक्यूट हो गए। अगर जो बचा है उसका एवरेज अगर Q से बड़ा है, उसका एवरेज Q से बड़ा है, मतलब टोटल टाइम जितना है उसमें फिर से P1 to P5 एग्जीक्यूट हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि ये तो हो गया टी माइनस एन एस,
और डिवाइड बाय जो n-1 है वो हुआ वो एवरेज सब प्रोसेस का जो यूजफुल जो वर्क करेगा वो, है ना? सब प्रोसेस का वर्क यूजफुल वर्क टाइम का वो एवरेज है ना? हाँ हाँ तो अगर क्या बोलते उसको, अगर वो ग्रेटर देन अगर क्यू हुआ मतलब क्वांटम टाइम हर एक प्रोसेस के लिए, हाँ तो फिर सर वो ज्यादा टाइम ले, और एक बार उसको क्वांटम टाइम को मतलब वो और एक बार क्लॉक साइकिल चेंज होने से ना वो फिर और एक स्लॉट शुरू हो गया, यहाँ पर और एक स्लॉट शुरू हो गया। सर But तो जब स्विच होगा फिर से in this, then part of this P1 to P5 gets executed, rest will be left out, है कि नहीं? हाँ सर वही बोल रहा हूँ। और अगर वो QT अगर ग्रेटर देन हुआ है ना, हाँ तो फिर वो क्या बोलते उसको, गारंटी करेगा कि पूरा पूरा वो प्रोसेस एक ही साइकिल में हो जाएगा। एक ही साइकिल में अगर ए क्यू इज ग्रेटर देन टी ऑफ टी माइनस एन, इस एवरेज से अगर क्यू बड़ा है देन ड्यूरिंग दिस टाइम फ्यू ऑफ द प्रोसेसेस गेट्स एग्जीक्यूटेड, it may not executed P1 to P5 all, but in the top case, in A case, all the process gets executed once again. That is the thing. सर लेकिन मिनिमाइज करने बोला है ना। हाँ मिनिमाइज, आप अगर मिनिमाइज करोगे देन ऐसे भी हो सकता है आपका पार्शियली एग्जीक्यूट होगा, वो भी तो सही नहीं है ना। दैट इज द बेटर क्या है, आप सोच लीजिए कि आपका क्वांटम टाइम ऐसे फिक्स किए हो कि ए भी एग्जीक्यूट हो गया और एक बार भी ये पांचों एग्जीक्यूट हो रहे हैं, बिकॉज यू आर रिमेनिंग में जितना बड़ा हाँ तो उसका मिनिमम क्यू होगा ही होगा, मतलब वो तो क्यू में ही एग्जीक्यूट होगा या उससे ज्यादा तो ज्यादा होगा। ओके तो मतलब ए आंसर। हाँ इसलिए ठीक है सर। क्या दिया है आंसर? ए ही था सर, बी। और एक लास्ट और दो करेंगे, दो भेजे हुए दो कर देंगे। हाँ ठीक है ना, सो दैट कुछ हम सीख तो पाएंगे। चार्ट में दिए थे आप, ए डाउनलोड कर दिया था, फिर ए वाला दिस इज Q3, एक बार से कर देता हूँ। Q3 हमारा आ गया, सेव हो गया, फिर और एक क्यों नहीं हुआ, हाँ ए हो गया, फिर इसको डाउनलोड कर देते हैं। डाउनलोड किया, फिर Q4 किया। तो मेरा ये था Q3। हाँ सर ये था ये है ये स्केड्यूल एल्गोरिथम, थोड़ा देख लीजिए तो क्या है। हाँ ए स्केड्यूल एल्गोरिथम असाइन प्रायोरिटी proportional sorry, a scheduling algorithm assigned priority proportional to the waiting time of a process. Okay, proportional to the waiting time of a process, इसको बोलते हैं SRTF। हाँ वो SRTF नहीं है, ए है SRTF। हाँ पर आंसर वो नहीं था, वो मैंने सोचा था। शायद अच्छा सर ये SRTF कैसे होगा, वेटिंग टाइम से प्रोपोर्शनल? वो एक शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम है किसी क्लास, तो वो आपने पढ़ा था तो क्लास पे SRTF। ऐसा ओके। ये क्या दिया है फिर, द स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम असाइन प्रायोरिटी proportional to the waiting time of a process. Okay, waiting time of process, every process starts with a 0. The scheduling reevaluate the process priority every t times unit and decided the next process to schedule. Which of the following is true if the processing has no IO operation of this algorithm? Is a fast come fast serve, round robin, shortest job first and SRT। ओके वो क्या बोला है फिर से लिख लेते हैं हम लोग। वो बोला है हमको कि he has told that the algorithm has a priority proportional to the waiting time। जितना टाइम वो वेट कर रहा है then based on that the priority will be decided। the priority proportional to the waiting time, directly proportional means if you are ज्यादा वेट करेगा then the priority will be increased।
Yes, then every time start with 0. So it starts with 0 every job, P1, P2, P3, P4. No, it is not this. So this is 0, 0, 0, 0. Then the schedule re-evaluate the process priority every t second. After every t second, again it will be evaluated. So you can now think about this. Which one of the following is true if the process has no I operation and all arrival at 0 time? मतलब देखिए, ये शॉर्टेस्ट जॉब भी नहीं होना चाहिए, राउंड ये एसआरटीए भी नहीं होना चाहिए. क्यों बोल कॉम्बिनेशन है? नो, जो राउंड रॉबिन और एजिंग का जो ज्यादा वेट कर रहा है उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिल रहा है कि नहीं? वो हाँ, तो वो तो एसआरटीएफ नहीं हो सकता, शॉर्टेस्ट जॉब भी नहीं हो पाएगा एंड एसआरटीए भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हाँ, उनके लिए छोटा के लिए वो ज्यादा प्रायोरिटी है. अगर छोटा के लिए उस देन बट व्हिच वन, whoever is waiting more you have to execute. Suppose P1, P0, P3 सब एक जगह एक टाइम पे आ गए. अगर एक टाइम पे आ गए, अगर P1 फास्ट एग्जीक्यूट हुआ, देन P2, P3, P4 जो पीछे आए हैं उन लोग का प्रायोरिटी बढ़ गया. ऐसा नो? हाँ, इन लोग का प्रायोरिटी बढ़ गया. Then whose priority will be increased fast? If you can look at among this P2, P3, P4 से किसका प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगा? तीनों का होना चाहिए ना, क्योंकि तीनों तो सिमिलर वेटिंग टाइम पे. तीनों का होना चाहिए, तीनों का होना चाहिए. फिर क्या चेक हुआ? टी यूनिट के बाद, टी यूनिट के बाद फिर क्या चेक हुआ? P2, P3, P4, P2, P3, P4, P2, P3, P4 में क्या हुआ? P2 का ज्यादा होगा. क्यों ज्यादा होगा बोलिए? क्योंकि हर एक का सेम होगा. P2 का जितना होगा, P3 का जितना होगा, P4 का जितना होगा. यहाँ पर P2 हो गया. फिर P3 भी आ सकता है ना P2 की जगह, मतलब कोई भी आ सकता है, लेकिन कोई एक सीक्वेंस में ही होगा. आइदर P1 देन P2. अगर P2 हो गया, देन इन दोनों का वेटिंग टाइम ज्यादा है. along this P1 has joined. Yes, P1 का थोड़ा छोटा होगा इन लोगों से. T time P1 has joined. Then P3, next कौन एग्जीक्यूट हुआ? P3. Yes. P3 यहाँ आ गया. फिर नेक्स्ट कौन हुआ एग्जीक्यूट हुआ? P4. Then P4 यहाँ हो गया. नेक्स्ट कौन एग्जीक्यूट हुआ? P1. Then it will be executed. What algorithm it is followed? Round robin, हाँ. Round robin with quantum time T. हाँ सर, इसलिए वो सेकंड मतलब वो थर्ड लाइन है ना, शेड्यूलर रीएवैल्यूएट द प्रायोरिटीज एवरी टी टाइम, तो इससे मेरे को लगा कि राउंड रॉबिन होगा. अदरवाइज क्या होगा? अगर टी टाइम नहीं, नॉर्मली रिलेटेड टू फास्ट कम फास्ट सर्व. यस. बट यू नो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन राउंड रॉबिन एंड फास्ट कम फास्ट सर्व? सर वो अगर क्वांटम टाइम लॉन्गेस्ट वेटिंग टाइम बस टाइम से ज्यादा हो गया, राउंड रॉबिन रिलेटेड विद द फास्ट preemption. हाँ, ACFS plus preemption is nothing but a round robin. So that's why it is. Okay, next. और सर एक लास्ट क्वेश्चन था, पर वो पता नहीं काटते कैसे. सर ये दोनों क्वेश्चन है, ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का है, ये सॉल्व कैसे करते हैं? ए वाला करते हैं थोड़ा. हाँ ठीक है. आप लोग के पास ए वाला एटलीस्ट कर लेते हैं, एक वाला. हाँ, एक कर लेते हैं. एक कॉन्करेंट प्रोसेस किया. First one at least will do it. So just look into it. Consider the क्या लिखा है? थोड़ा मुझे दिखाई नहीं देता. Consider the concurrent processes. Process P1, P2 and P3. So हमारा हो गया. और एक करता हूँ. P1, P2, P3. 1 minute. Okay. साइन कर लेता. पार्थ सार सेपटे अच्छे आसना आज. Okay. So P1, P2, P3 are the three processes. So P1, P2, and P3. Yes, what he does, he is saying that shown that which access a shared variable D को access कर रहे हैं. D that has been initialized to 100. ठीक है? Then he is saying D equal to D plus 20, D equal to D minus 50, and D equal to D plus 10. Then the process are executed on a uniprocessor system. एक ही प्रोसेस है, प्रोसेसर है, सिस्टम running a
time shared operating system. Means certain time is given to them, like round robin type of things. Yeah? Okay. If a minimum and a maximum possible values of a D after the three processes have completed execution are X and Y respectively, then the value of Y minus X is what? Okay, वो बोला है कि last if the minimum and maximum possible values of a D after the three processes have complete their executions are X and Y. Yes, X is the maximum, Y is the X is minimum. So X minimum है, Y maximum है. respectively. Then find out what is Y minus X. You have to find the negative value. Okay. सर concurrent process मतलब ये जो मतलब जब भी वो स्विच हो जाता है वही concurrent process है ना? हाँ, वही आपका concurrent process ही होगा. अच्छा. Yes. बोलिए कोई एक बोलिए. ये शायद हम कर पाएंगे. X है शायद 50 और Y होगा 130. हाँ, थोड़ा सोच के बोलिए. हम लोग कैसे सीखे थे? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहाँ पे हो पाएगा? यहाँ पे डी वाला में. हम वहां पे नहीं. हम लोग सीखे थे ये जो लाइन है ना, ये सूची के ऐसे लिखा गया है. ओके, याद है ना? और एक चेंज होने से पहले वो दूसरे में चले जाएगा. हाँ, मूव तभी वो होगा एक्स कमा डी. हाँ, ऐसे हर लाइन पे लिखा गया है. थोड़ा मैं लिख लेता हूँ. हाँ, मूव डी कमा एक्स, देन सब एक्स कमा 20, then move, then x comma d. Others, are you listening or not? Are you present? Yes, sir. Yes, thank you. So move d comma x. We should thanks to Devanjan today. Thank you, Devanjan. Add this, then move x comma d. हाँ, बोलिए. सो हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहाँ कहाँ पर हो सकता है? यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है. सो व्हाट शुड बी द पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू? बोलिए. हो सकता है d का वैल्यू. इसे d का वैल्यू ऐसे एक एग्जीक्यूशन कीजिए जैसे कि d का वैल्यू आपका मैक्सिमम हो सकता है. मतलब क्या है? फिर से बोल रहा हूं मैं. इसका मीनिंग हो सकता है, आप बोल पाओगे. दे रीड डी किया, देन बोला कि एक डाटा लिया के इक्वल टू डी प्लस 20, फिर किया, देन डी इक्वल टू के. यहां पर वही किया, रीड डी किया, फिर के इक्वल टू डी माइनस 50. अगर इसका डाउट है इसलिए ऐसे लिख लिया. Then d equal to become k. Sorry, d equal to become k. Next line पे लिखा गया है same read d, then k equal to d minus d plus 10. है कि नहीं? d plus 10. Then d equal to k. ये d सब same d. हाँ, सॉरी गलत. हाँ, ठीक है ना? अभी बोलिए क्या मैक्सिमम हो पाएगा? सर वो d plus 20 में मैक्सिमम होना चाहिए ना? ऐसे मैक्सिमम हो पाएगा आपका d 100 दिया है, पहले ही 100 दिया है. क्या क्या होता है बोलिए यहाँ पर? अच्छा, वो की सर मैक्सिमम. हाँ, मैक्सिमम सर पहले में के में वो सर 130 50 वाला 130. कोई बोल रहा है 130. इज इट करेक्ट? हाँ सर, ये तो आना चाहिए. कैसे हो पाएगा? वो भी सर वो -50 उसमें ना वो वाला d -50 वहां पे रुक गया. हाँ, सपोज ए पहले से ही कॉन्टेक्स्ट पहले कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुआ है, ए रीड किया है. ठीक है ना? सपोज ये पहला स्टेप है. सोच लीजिए वो जो बोल रहे हैं ए 1 है, देन इसको डी कितना मिला होगा? 100. यस, उसके बाद सोचिए, क्योंकि ये नेगेटिव वाला है, इस नेगेटिव
नेगेटिव को पहले कर देते हैं। सो सपोज ये सेकंड स्टेप हुआ, इसको क्या मिला 100 सोच लीजिए, इसके बाद ये दोनों एग्जीक्यूट हो गया, 50 हो गया, फिर कितना हो गया, डी आपका 50 हो गया, हो गया, बट वो एग्जीक्यूट हुआ फिर से 110 तो कितना हो गया 110 हुआ, क्योंकि 100 इसका लोकल वेरिएबल में है स्मॉल, ओके। सो ए हो गया 100, ओ 100 सर कॉन्टेक्ट स्विचिंग होने के बाद एग्जीक्यूट होगा ना, ए कॉन्टेक्ट स्विचिंग होने के बाद ए एग्जीक्यूट हुआ। हाँ तो फिर से डी तो चला जाएगा ना, मतलब 100 ए ऑलरेडी रीड कर चुका है पहले, अच्छा अच्छा रीड करके स्टोर कर लिया, तो वही डी को ही यूज किया है। सो 100 प्लस 10 हुआ 100, 100 देन ही रीड, if he read 110 किया, then 20 ऐड किया, then this, so 130, then what should be the minimum one? और कोई बोलिए, सेम पर्सन नहीं, 130 जो बोले मत बोलिए, मिनिमम क्या हो पाएगा? सर जब लास्ट में हम लोग 150 को करेंगे, नो सही बोले, लेकिन अगर देखिए मिनिमम कब होगा, अगर 10 ऐड होके 50 माइनस हुआ तभी भी मिनिमम नहीं है, नहीं होगा, 20 ऐड होके 50 माइनस हुआ तभी भी मिनिमम नहीं है, सिर्फ 50 माइनस होगा तो मिनिमम, ओनली अगर 100 से 50 माइनस होता है तब जाके मिनिमम है। लास्ट सर में मल्टीपल टाइम्स कॉन्टेक्ट स्विचिंग हो सकता है? नो हाँ, इसको पहले ही एग्जीक्यूट कर दीजिए, पहला 1, तो इसका डी में कितना आ गया 100, फिर इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए, इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए, क्या होगा, कुछ होगा मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं, जो भी होगा मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रीड दिस 100, देन 100 माइनस 50 इज हाउ मच, 50, सो मैक्सिमम हुआ ये, मिनिमम हुआ ये, दिस माइनस दिस होगा सम माइनस 80। सर ये कॉन्टेक्ट स्विचिंग में मेरा प्रॉब्लम होता है, मतलब कब करना है वो, ऑप्टिमाइज्ड कॉन्टेक्ट स्विचिंग कब होगा वो थोड़ा, मतलब सिंपल सा कॉन्टेक्ट स्विचिंग है, आपको मैक्सिमम चाहिए, मतलब 50 इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए मेरा डाटा में। अच्छा हाँ, तो फिर 130 आएगा, और मिनिमम चाहिए तो सिर्फ 50 इन्वॉल्व होगा, तो अच्छा। If 50 will not involve in my data, then I should read 100, add it, then he should read 110. Yes or no? If he is reading 100 and reading 100, then आपका 130 नहीं आएगा, either 110 आएगा या 120 आएगा, 120 आएगा, but I want 130, मतलब at least this will be executed first, then this will be executed, then only 130 आएगा, or this will be executed first, then this will be executed first, then only it will be, but this has to be discarded. How it will be discarded? Provided I have already read my data. Yes or no? Provided I have already read my data, then only it will happen. Okay, that's okay fine. okay, thank you, okay. That much है, next class और देखेंगे अगर हो पाएगा। Thank you. थैंक यू सर। वो भी थोड़ा डाइनिंग फिलोसोफर वाला और एक बार सोच लीजिएगा हर एक, हाँ मैं सोचूंगा, but we have to find proper answer, what is, why it is, and what should be the answer. That. Thank you. I'm ending now. Okay sir. Okay sir. Manas, Jiba. चलो